नमस्कार छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक मिलिंद गायकवाड़ और आप देख रहे हैं यश एकेडमी यूट्यूब चैनल। सीईटी 2022 अभी शुरू हो गए। कुछ छात्रों ने यश एकेडमी के केमिस्ट्री के वीडियोस देखे, लेकिन उन वीडियोस में मराठी और अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया गया है। जो भी एक्सप्लेनेशन उन वीडियोस में है वो मराठी या अंग्रेजी में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो लड़के जो वीडियोस देखते हैं उनको मराठी भाषा समझ में नहीं आती। तो कुछ लड़कों ने रिक्वेस्ट किए, हम्बल रिक्वेस्ट किए कि सर प्लीज एक्सप्लेन द ऑल कंटेंट्स इन इंग्लिश, आइदर इंग्लिश और हिंदी। तो I will try my level best to explain the content in Marathi, English and Hindi also. ठीक है, आपण आता सुरू करूया. This is first question to you. The number of particles per unit cell in a face-centered cubic is oblique R. A1, B4, C8, D2. आप देखें फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और लैटिस इज गिवन. You know that, or you should know the number of particles in simple cubic, body centered and face centered cubic unit cell. In simple cubic there is a 1, in body centered there are 2, and in face centered cubic lattice or unit cell there are 4 number of particles per unit cell. So B is the correct answer of option of this MCQ. ये अगला क्वेश्चन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D series of D block elements is. यहां आपको क्या पूछा है? 4D series जो D ब्लॉक में है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है. इफ यू concentrate on 4D, then the elements which belongs to 4D series have completed their electronic configuration of inert gas element, that is the krypton. So focus on krypton in the given options: A krypton, B xenon, C argon, D argon. So A is the correct answer option of this question. Next, third question: which among the following salts solubility decreases with increase in temperature? Here solubility of the salt decreases with increase in temperature. If a salt is dissolved in water and if there is a exothermic reaction, then what happens? If you are heating the substance, means already you are increasing the temperature and the reaction is exothermic. So whatever the heat formed during the dissolution is accumulated and its solubility decreases. Now you have to find out the salt which when dissolved in water, its solubility decreases with increase in temperature. NaNO3, KNO3, both the solubility increases with increase in temperature. So correct answer option of this question is the sodium sulfate.
Sodium sulfate, when dissolved in water, it dissolves in water with increase in temperature. It means this reaction is a exothermic reaction. So correct answer option is a Na2SO4. Next one, अगला सवाल है, solubility of which among the following substances in water increases slightly with rise in temperature? Four options are given: A, potassium bromide; B, sodium nitrate; C, potassium nitrate; and D, potassium chloride. Here you have to find out the salt when dissolved in water, its solubility slightly increases with increase in temperature. जो भी salt पानी में अगर डालोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसकी जो सोल्यूबिलिटी है ना, देयर इज अ चेंज स्लाइटली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो इसमें कौन सा सॉल्ट है कि जिसकी सोल्यूबिलिटी स्लाइटली चेंज होते थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद? तो पोटेशियम ब्रोमाइड तो नहीं है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, उनकी तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है. तो व्हाट इज लेफ्ट? पोटेशियम क्लोराइड इज द सॉल्ट, इट्स solubility slightly changes with rise in temperature. अगला सवाल है फिफ्थ, which of the following pair will form an ideal solution? Whenever you across the ideal solution word, तो राउल्स लॉ फॉलो ही करेगा. आपको मालूम होना चाहिए ideal solution follows the ideal or obeys the ideal राउल्स लॉ. तो आइडियल सॉल्यूशन कैसा होता है आपको मालूम होना चाहिए. इधर फोर ऑप्शंस आर गिवन: ए, इथेनॉल प्लस एसीटोन; बी, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म; सी, टोलिन प्लस बेंजीन; एंड डी, वाटर HCl. अगर ये डी जो ऑप्शन है उस पर फोकस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा वाटर HOH. So HO bond is a polar in nature, and if you focus on HCl, it is also polar in nature. So oxygen of water forms bond with hydrogen of Cl. म्हणजे both compounds have different electronegativities आणि त्यामुळं तिथं हायड्रोजन बॉन्ड हा तयार होतो. त्यामुळं such type of pair will not form an ideal solution. मग आयडियल सोल्युशन होण्यासाठी काय, तर इथं एक डायरेक्ट आन्सर जे आहे ते टोलिन अँड बेंझीन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन. ये टोलिन जो है तो टोलिन दूसरे टोलिन के साथ जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो सेम intermolecular forces is developed with benzene because both compounds have the similar structure and similar polarity. If there is a similar polarity, then there is these two salts, toluene and benzene, they do not associate, they do not dissociate, so they form an ideal solution. Okay. अगला सवाल सिक्स्थ, which of the following pair will form non-ideal solution? Non-ideal solution. अभी पहली स्लाइड, इसके पहली जो स्लाइड थी उसमें आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया. तो अभी उसके अपोजिट कैरेक्टर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हो गए. नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल इसमें क्या होगा?
Bromobenzene, chlorobenzene both have similar structure. N-pentane, N-hexane both have similar structure. Ethyl iodide, ethyl bromide both have same or similar structure. So what is left? Ethanol and acetone. So both compounds can form because both the compounds have different electronegativities. They have polar bonds, so they can form bonds between these two, that is intermolecular force of attraction आपण म्हणूया तो डेव्हलप त्याच्यामध्ये होतो. So correct answer option is ethanol and acetone. Seventh question, in a body centered cubic unit cell, edge length is, that is A is asked. These are the options. So you have to find out the correct answer option from this given options. So correct answer option is A, because 4R is equal to under root 3A. So it is modified form. So correct answer option is A. अगला सवाल 8th सवाल from chemical thermodynamics. For an adiabatic process, which of the following relation is correct? Here A, delta V is equal to 0, B, P delta V is equal to 0, C, Q is equal to 0, D, Q is equal to plus W. First of all, आपको एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए. Adiabatic process is a process in which there is either heat is not transferred or absorbed. म्हणजे तिथं हीट त्या सराउंडिंग सिस्टीम पासून सराउंडिंगला किंवा सराउंडिंग कडून आत दिली जात नाही किंवा घेतली जात नाही. अँड इफ देर इज अ नो ट्रान्सफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग्स means heat transferred is a 0, and that is Q is equal to 0. So correct answer option of this question is a C. Heat is neither absorbed nor evolved in the adiabatic process. अगला सवाल 9th, which is not true for the entropy change. Statement based question or memory based question. Here statements are given and you have to find out the correct statement which is not true for entropy change. ये जो 4 स्टेटमेंट्स ऑप्शन में दिए उनमें से जो स्टेटमेंट ऐसा आपको सिलेक्ट करना है कि जो एंट्रोपी चेंज को एप्लीकेबल नहीं होता. ए, it is a state function, entropy change in entropy or entropy change is a state function. B, it is expressed in K per joule. आपको मालूम है एंट्रोपी चेंज किसमें एक्सप्रेस की जाती है, उसका क्या है? दिस इज द करेक्ट आंसर, जूल पर केल्विन. इट इज नॉट पाथ फंक्शन, ये भी सही है. It is proportional to Q reversible. This sentence is also correct. So B is the correct answer option. 10th numerical. In the reaction 3A gives 2B, rate of reaction plus dB divided by dt is equal to. ये ऑप्शंस आपको दे दिए, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है जो करेक्ट है. इधर रिएक्शन देखोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा क्या हो सकता है. क्या आंसर हो सकता है? डी. अभी देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज इक्वल टू हाफ dB divided by dt is equal to minus 1/3, that is 1/3, because there is a disappearance of the reactant dA upon dt.
But in this equation, what is asked, the D, that is the small change in concentration of base with respect to टाइम, ये आपको पूछा है. इधर आता है ये, लेकिन पूछा है. तो अगर इनमें से देखे तो आपको पता चल जाएगा कि इस साइड को, राइट साइड को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -2/3 dA divided by dt. So B is the correct answer option. अगला सवाल. For a first order reaction, K is equal to 10 raised to minus per second. The time of 1/4 life will be. 1/4 is nothing but 0.25. Okay. The value of K is given and you are asked the time. And these are the options. Which formula should be used to solve this example? Correct answer is this. See, T is equal to 2.303 divided by K. The value of K is placed here. Log A divided by A minus X. So if you solve, you will get the answer 1.386 into 10 raised to minus 4 second. Here numericals are particularly selected so as to increase the difficulty level of questions. आणि आपको ये जो न्यूमेरिकल्स है ये सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम कैलकुलेशन भी आपको जरूरी है. अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है तो आपको रिड्यूस करना चाहिए. इसके वास्ते ये थोड़ा सा हार्ड न्यूमेरिकल्स इसमें सिलेक्ट किए. ये डिफिकल्टी लेवल JEE के आसपास ही होगी. ओके. 12th question. The half life period of first order reaction is. This is simple one. ये आपको मालूम है इसका क्या फॉर्मूला है? हाफ लाइफ T half is equal to, which is the correct answer or option? D is the correct answer option. 13th question. If rate constant for a first order reaction is a K, here K is nothing but rate constant of first order reaction. The time T required for the completion of 99% of the reaction is given by. Again, you have to use the same formula. T half is equal to 2.303 divided by K log A divided by A minus X. ये फॉर्मूला अगर आप इधर प्रॉब्लम क्या है कि A minus X, the amount left after time T, तो 100 minus 99, तो 1 आएगा. ऊपर क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 100 है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तो 1 है, तो 10 raised to 2 उसका लॉग अगर देखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जरूर आ सकता है. इसका आंसर क्या है? T is equal to 4.606 divided by K. So you can use this formula. This is the last question of this video. With this explanation, I will stop here. Which among the following reactions is an example of pseudo first order reaction? Decomposition of hydrogen peroxide, conversion of cyclopentane to propene, decomposition of N2O5, and inversion of cane sugar. Which is the correct answer option of this MCQ? Come on, tell me in comment box. सांगा लवकर. तर यामध्ये करेक्ट आन्सर ऑप्शन काय असणार आहे? डी, इन्व्हर्शन ऑफ केन शुगर. दिस इज एक्झाम्पल ऑफ pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मला वाटतं हे आपल्याला
समजलेला असणार आहे. भाषेचा, हिंदी भाषेचा वापर थोडासा होत जाईल. त्याचं कारण मुलांची मागणी आहे आणि सर्व विद्यार्थ्यांना या व्हिडिओचा फायदा होणं तितकंच गरजेचं आहे. आणि त्यामुळं ज्या विद्यार्थ्यांनी मागणी केली त्यांची मागणी या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी पूर्ण करतोय. आणि जर आपण यश अकॅडमीचे व्हिडिओज पाहत चला. चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्यानंतर तुम्हाला आवडला याची खात्री झाली असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये तसं कमेंट टाका की हा व्हिडिओ आवडला किंवा काही त्यामध्ये सजेशन्स असतील किंवा तुम्हाला काही आणखीन अपेक्षित असणार आहे. पण आपण व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आपल्या मित्राशी शेअर करायला विसरू नका. Give suggestions in comment box to improve the content as well as quality of the video. Once again, thanks for watching this video.